So gear up and tighten the seat belts. Group Captain Shubhanshu Shukla returning to Earth in the next few hours. Wrapping up a landmark mission aboard the International Space Station, Shukla prepares for re-entry, carrying with him not just data and discoveries, but it's the aspirations of 1 billion Indians as well. It's a heartfelt message that Shuk's echoed with regard to the words of Rakesh Sharma of 1984 and reiterated it, saying, even now in 2025, India is still sare, jaha, achcha. It's a spirit that he captured from space about ambition, fearlessness, confidence and pride that Indians feel. Basically, just to give you a background, the undocking of the Dragon capsule from the International Space Station will begin at around 4:30 p.m. Indian Standard Time. And there will be a doorbit burn that will be completed by 15th of July. So there's still time to go eventually by the time he touches Earth. And remember, this is also a very significant part of the whole project and the operation. The splashdown is expected July 15th, 12 p.m. of the California coast. It has been an incredible journey. I did not imagine all this when I started on Falcon 9 on 25th. And I think it has been made amazing or incredible because of the people who are involved. The team that is standing behind me, you guys have made it really special for us being here on the station, and it was an incredible joy to be here and working alongside with a bunch of professionals like you. With the past 2.5 weeks or so, we have done a lot of science on the station. We have done outreach activities and also looked back at the Earth. Whatever time we found, we were always looking out the window, and it almost seems magical to me. And I would like to take this opportunity to thank my country and all their citizens for supporting this mission and me with all their hearts. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। So this would be about, remember, all the scientific data that has been accessed, which will be brought back to Earth and analyzed further. But what a moment that has been, not just for Group Captain Shubhanshu Shukla, but India as much in the history books, to now be a part of the International Space Station projects, and then to reiterate what was said to former Prime Minister Indira Gandhi in 1984 by Rakesh Sharma, that sare jahan se achcha Hindustan hamara, to have it now in real time played for us as well, and to have it spoken again by Shubhanshu Shukla. So of course, we will be hopeful and we'll be praying for a smooth landing for Shubhanshu Shukla and the team to Earth, but there will be work thereon as well. It's not just about the projects that was at the ISS, but of course what happens after that with the data and the discoveries. Akshita Nandgopal was in the United States of America when the launch happened. She's here right now when the closure of it is coming in. Akshita, tell us about the timing, what is the project, and even landing in itself will be, of course, a huge milestone. There'll be a lot of checks and balances there. It's a 22-hour-long journey, essentially, for Group Captain Shukla and the rest of the Axiom 4 crew. Very technical, very challenging. I'll just explain to you how really it works. Once you have, in fact, the undocking happening, where the Dragon capsule separates from the International Space Station, you will then see it moving away. This is completely, by the way, an automated process controlled by Houston. So you'll see the undocking happen and then the hatch closing right after that. Once that happens, what you're going to see is, and I don't know if our viewers remember, but when the docking actually happened, you had it essentially chasing, the Dragon capsule chasing the International Space Station. Now it'll be, in a way, reverse, and that's what we've shown for you. As the International Space Station continues in its orbit, you'll see the Dragon capsule going the other way, getting closer and closer to its destination. Right after that, you will see a trunk, which is part of the capsule, separating. And this means that the capsule now will be on its own, on a journey all alone back to planet Earth. Once the nose cone is closed, because you have the trunk being removed, then it'll start the descent. The descent is very controlled, and this is perhaps one of the most challenging parts of the entire mission, because the parachutes have to be deployed at just the right moment, and you have to ensure controlled descent, because otherwise full speed, you can only imagine what will happen to the crew then.
It happens at an exact location that's been chosen right now by, in fact, those who are part of the AX4 mission, Axiom, NASA, all of them have picked a location in the Pacific Ocean. You'll have splashdown happening at one specific location there. Boats will be waiting for the splashdown to happen. 1 hour after that is when the hatches will be opened and the astronauts will be allowed out. This is the entire 22-hour process. Today, Indian Standard Time, of course, post 4 p.m. is when the undocking will happen. And then the day after 22 hours at about 3 p.m. is when splashdown will occur in the Pacific Ocean. It's going to be a sight to watch out for. The entire process, of course, hugely intriguing, which we'll be tracking live here. But that splashdown is the moment you know that it's been a successful mission. All right, so also listen in now to the family members of Group Captain Shubhanshu Shukla. Thank you very much, Akshita, for the details on that. Remember, it's as much about all Indians, but especially for the family that's seen the struggle. जिस दिन गए थे उस दिन मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे थे, खुशी के आंसू थे कि आपका बेटा, और आप देख रही थी स्क्रीन पर बार बार कि वो फुटेज दिख जाए, और अभी आपके चेहरे पर मुस्कान है, अनडॉकिंग है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अब इतने दिनों के बाद बच्चा वापस आ रहा है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बच्चे को वापस आने को सुन के। अच्छा, अब फोन पर बात हुई आपकी, लास्ट कब हुई? कल हुई थी बात, कल दोपहर में बात हुई। क्या बातचीत हुई? यही बातचीत हुई, सब अपने यहाँ बता रहे थे कि अब हमारी आज पैकिंग हो रही है और आज अब कल निकलना है और आज से ये लास्ट कॉल है, इसके बाद अब बात नहीं होगी, यही सब बातें हो रही थी बस। आपने मुझे आखिरी बार बताया था कि उन्हें घर का खाना पसंद है, तो आपसे उन्होंने कहा नहीं कि मैं घर आऊंगा तो दाल रोटी बना के रखना? हाँ, बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा कि जब मैं घर आऊंगा आपकी खाऊंगा। इस बार ये बोले कि अब की मैं खाऊंगा घर का खाना। कल दोपहर में वो वापसी कर रहे हैं पृथ्वी पर, हालांकि कैलिफोर्निया के तट पर वो आएंगे, कैसी अनुभूति है फिलहाल? बहुत अच्छी अनुभूति है, हम लोगों को बड़ी खुशी है कि उनका ये मिशन अच्छी तरह पूरा हो गया और आज अनडॉकिंग हो जाएगी, तो कल ये वापसी की जो है ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, और अब अच्छी तरह डॉकिंग हो जाए और ये वापसी हो जाए, इससे ईश्वर से प्रार्थना की है हम लोगों ने आज। हम लोगों की दुआएं हैं, पूरे देश की दुआएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसको आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी है, तो अच्छी तरह उसका मिशन पूरा हो गया। हाउ इज द जोश? एब्सोल्युटली हाई सर, एंड इससे ज्यादा हाई नहीं हो सकता है अब ऑफ कोर्स, एंड बट मिक्स्ड इमोशंस हैं, ऑफ कोर्स एक नर्वसनेस भी है, बट स्टिल वेरी 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 प्राउड एंड हैप्पी एंड एक्साइटेड ऑफ कोर्स। शुभांशु से बात हुई आपकी इस बीच में कई बार, क्या कुछ पेरेंट्स से तो चलिए ठीक है, अपना भाई बहन का अलग ही अंडरस्टैंडिंग होता है, क्या कुछ बोला उन्होंने? बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। एज अ सिस्टर मैं देख सकती थी कि वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे, एंड जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिलता है या नई नई जगह मिलती है, कोई नया पार्क चला जाता है बच्चा, वैसे ही वो बिहेव कर रहे थे, क्योंकि वो हमेशा से बहुत इंक्यूजिटिव रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मन करता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो नई चीज़ें वो जो देख रहे थे वो उसको इतना एक्साइटमेंट के साथ हमसे शेयर कर रहे थे, हमको बता रहे थे कि देखो यहाँ मैं सोता हूँ, यहाँ मैं खाना खाता हूँ, इस विंडो से मुझे विजन दिखता है, एंड ये मेरा वर्क प्लेस है। बहुत एक्साइटमेंट उनके चेहरे पे और वो खुशी दिख रही थी, एंड ऑफ कोर्स वो एक्साइटमेंट जब वो किसी बच्चे में रहेगा तो उसकी फैमिली मेंबर्स को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। उन्होंने आपसे ऐसा शेयर किया जो आप शेयर करना चाहिए, कैसी मेमोरी वहां से ही जो आपको मतलब एक छू गई हो, टचिंग मोमेंट? एवरीथिंग एवरीथिंग, बिकॉज दैट इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है वो सब एक्सपीरियंस करना, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट कि माई ब्रदर वॉज हाईली हैप्पी ओवर देयर, दैट इज लाइक आई कैन नॉट इग्नोर दैट इमोशन, दैट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, दैट ही वॉज so happy